Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, and today I'm here with a series of lecture that is related to F.Sc book, part first, and heat lightning, that is related to heat lightning and page number 3. और हम इस पर डायलॉग्स पर जा रहे थे और पिछला सारा सीन्स जो डिस्क्रिप्शन था कैरेक्टर का मैन का वो इंट्रोड्यूस हो चुका था. गर्ल, you are waiting for the bus, aren't you? Oh, don't leave me. She rushes into his arms. वो जल्दी से उसके बाजू में चली जाती. मैन आदमी बोलता है, dear my dear, of course I won't leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. उसको तसल्ली दे रहा है. Girl, the bus? What time? Oh, tell me it will be here soon, man. The last one's due any time now. The storm has probably slowed it down. कि वो जल्दी अभी आती है. तूफान ने इसको कम इसके आने की जो टाइम तो उसको डिले कर दिए. नाउ लिसन टू मी, आई शैल डू वट एवर आई कैन फॉर यू, बट यू मस्ट टेल मी व्हाट हैज हैपेंड. लेकिन इससे पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था. गर्ल, यस यस, आई मस्ट गेट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ. कि मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, यानी अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होगा. गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ मीन कंट्रोल. ये फ्रेज बता रही है गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ मीन कंट्रोल. मैन कह रहे हियर सिट डाउन, यहाँ पर तुम बैठ जाओ. हियर सिट डाउन. He brings her down to the bench facing the audience. वो उसको लेकर आता है उस बेंच की तरफ जो ऑडियंस के सामने होता है. There now, that's better, isn't it? Now, girl, I was at a party. I could have stayed all night, but I thought that I had enough gas to get home. अब ये MCQs में आ सकता है कि उसने पार्टी में रहने का सोचा, लेकिन फिर उसके दिन में आइडिया है कि गाड़ी में तो गैस है, मैं घर जा सकती. गर्ल, मैन, वेयर डू यू लिव? अब ये क्वेश्चनिंग है, इंटरोगेट कर रहे मैन, इन्वेस्टिगेट कर रहे गर्ल से बहाने. गर्ल, अबाउट 8 miles फ्रॉम हियर. यहाँ से मैं 8 miles के फासले पर रहती हूँ. मैन, I see. Girl, about a mile from here, I suppose. I don't really know. अब वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही है. पहले कहती है कि मैं जहाँ से रहती हूँ वो 8 miles है. फिर आगे से कहती है कि about a mile from here. जो बस स्टेशन है इससे 1 mile from here. I suppose I don't really know. मैं नहीं जानती. ठीक है. अब वो इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज हो चुकी है कि वो वाकई भूल चुकी है कि 8 miles का डिफरेंस है या 1 mile का. I ran out of gas. I took my flashlight, locked the door, started walking down the road. कि मैंने अपनी फ्लैश ली और सड़क की तरफ चलना शुरू किया. There are so few cars this time of the morning, but I thought anyway. I knew I could get the bus when it came along. कि सुबह के टाइम बहुत कम गाड़ियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं मैनेज कर लूँगी. Go back for the call later. She breaks off and glances at the door. फिर अब वो breaks off मीन बात का जो होती है वो उसको कट कर देती है और अचानक फिर दरवाजे की तरफ देखती है. She shudders as shivering. यूं बंदा कांपना शुरू कर देता डर से, भूख से, सर्दी से. तो she shudders at her own thought. एक झरझरी सी जिसको कहते हैं लेने का, कि अपनी सोच में एक झरझरी सी शिवरिंग सी होती है. Man, come on, you are doing fine. Girl, I must have walked. I don't know.
just a little way when I noticed a car pulled off into a lane. कि इसी रास्ते में, जिस रास्ते में मैं जा रही थी, वहाँ पर मुझे लगा कि वहाँ पर एक गाड़ी रुकी है। I saw the rear light burning। जो गाड़ी की बैक साइड होती है उसको रियर लाइट कहते हैं, तो बर्निंग मीन्स कि वो जल रही थी, ठीक है। I wanted to call them। मैं अभी उनको बुलाने का सोच रही थी। I thought I just call out to them and ask if they could help me। कि मैं उनसे पूछूं कि वो मेरी मदद कर सकते हैं। If they might let me have some gas। क्या वो मुझे कोई गैस प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं Did you? Good. No, I didn't get the chance। I walked near enough to the car to be heard if I called out, but before I called out, मैं इससे पहले कि मैं उनसे मदद के लिए कहती, I saw someone। मैंने किसी को देखा। The front door of the car was open and someone standing by it। कि गाड़ी का जो पहला हिस्सा था, पहला दरवाजा, फ्रंट डोर था, वो ओपन था और इसके आगे कोई आदमी खड़ा था। I couldn't tell what it was at first, and then the lightning, and I saw her hand, then her head, her hair was light and long and it dragged in the mud। ये किसी औरत की बात करी कि वो आदमी उस औरत को निकाल रहा था जिसके बाल भी मडी हो चुके थे। पहले उसका बाजू के फेस पे उसके हेयर नजर आते। मैन, दिस इज dreadful। There is a flash of lightning and a crash of thunder। और इसी समय पर लाइटनिंग जो होती है, थंडर की भी आवाज़ आती है और लाइटनिंग भी होती है।